Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the group 1 of the periodic table. This is the second video of the periodic table. Before going through this video, please watch the first part, which is the introduction part, so that this video make more sense to you. So, in the previous lecture, I had discussed about the general properties of the periodic table, how the elements are arranged, what are the similar properties of the elements present in the group 1. So, in today's lecture, we will particularly discuss about the group 1 elements. Let's start with the first point. The first point states that the group 1 elements are known as alkali metals. As you can see here, I had displayed the elements which belong to group 1. The first one is the hydrogen, then comes sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. These are the elements which belongs to the group 1, and these all elements are known as alkali metals. Alkali क्या होता है? Alkali is a substance that produces OH negative ion in water. Fine. So ये जितने भी elements हैं आपके पास, these all ions produces OH negative ion in water. जब भी हम सोडियम को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है विच इज NaOH. इसी तरह से पोटाशियम, लिथियम, रुबिडियम भी सिमिलर हाइड्रो ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं. इस वजह से हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स भी कहते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज दे ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. और ये पॉइंट हम लास्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं. सिंस ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एंड आई हैड टोल्ड यू कि जो ग्रुप नंबर होता है वो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है. ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 के, इट मींस दे ऑल हैव only one electron in their valence shell. This is same for lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. These all elements have only one electron in their valence shell. इसी वजह से we had placed them into the group 1. The next is they are soft and easily cut by the knife. जो आपके alkali metals होते हैं they are really soft और हम उनको बिल्कुल क्ले जैसे आप क्ले की कंसिस्टेंसी ले सकते हैं उस तरह से हम इनको इजीली पीस में कट कर सकते हैं बिकॉज दे आर रियली सॉफ्ट इन नेचर. The next is they have relatively low melting and boiling point compared to all metals. डेफिनेटली मेटल्स हैं तो उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन अगर हम सारे मेटल्स से उनको कंपेयर करें जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं उनके कंपैरेटिवली लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. अगर आपके पास एक एलिमेंट आ जाए फ्रॉम द ग्रुप 1 और एक एलिमेंट आ जाए फ्रॉम द ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स, तो डेफिनेटली द ट्रांजिशन मेटल्स विल हैव द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, but the group 1 elements have lower melting and boiling point. So the next is that they have lower densities than the other metal. So after the boiling point, the next concept is about the densities. वो कहते हैं कि अगर हम densities को भी compare करें तो group 1 के elements in all the metals particularly have low densities, right? So these three are the physical properties of group 1. क्योंकि कभी कभी examiner ask you about the physical properties, sometimes they particularly ask you about the chemical properties, और कभी कभी कहते हैं कि write two properties of the elements present in the group 1. So आपको categorize करना आना चाहिए. The physical properties are usually something related to the shape, size, texture, taste of the elements. So हम यूजली फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डेंसिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं और नेचर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं. और आप देख सकते हैं कि इन 3 पॉइंट्स के अंदर आई हैड डिस्कस अबाउट ऑल दीज 3 थिंग्स. सो द नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल. फ्रॉम देयर the first property is the highly reactive metals and react vigorously with oxygen and with water. अगर हम chemical reactivity की बात करें तो among all the elements, the group 1 metals are highly reactive and they react vigorously with the water and as well as with the oxygen. तो इसका मतलब है कि they give us the reaction with the oxygen and as well as with the water.
तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। एंड देन जब हम इसको सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। तो इसका मतलब है कि these elements give reaction with the oxygen and as well as with the water. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड्स। एंड आई हैड गिवन द एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन एज वेल देयर। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास इन रिजल्ट एल्कली फॉर्म हो रहा है विच इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि वी कॉल दीज एलिमेंट्स एज द एल्कली मेटल्स। And this is the physical representation of a reaction of lithium with the water, sodium with the water, and potassium with the water. So you can see that as the number of electrons are increasing, or as we moving down the group, the reactivity of the element is increasing, which will be explained in the next point. The next point states that the reactivity increases down the group due to the increase in the size of an atom. देखिए जो ग्रुप वन है वो बॉन्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इट यूजुअली फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। एंड हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर वी हैव अ मेटल स्पीशी एंड अ नॉन मेटल स्पीशी। जो मेटल की स्पीशी होती है इट ऑलवेज डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन। सो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जा रहे हैं डेफिनेटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल्स भी, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन पे न्यूक्लियस का होल्ड लूज होता जाता है, जिसकी वजह से जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बहुत ईजियर होती जाती है। और हम इन अदर वर्ड्स उसको कहते हैं कि द रिएक्टिविटी, द केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप increases in the group 1. So इसी वजह से आप देख सकते हैं कि lithium is reacting comparatively slower with the water. The sodium gives more vigorous reaction as compared to lithium, and the potassium, which is present further next to the sodium, it gives more violent and vigorous reaction with the water. So that's why we say that the reactivity increases down the group. The last point from the group 1 is that they form ionic compounds with the ionic formula +1 cation. So I had told you कि हम अभी सोडियम की ही बात कर रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो उसी को देख लेते हैं। अगर आप ये कंपाउंड देखें, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड where sodium metal has bonded with the oxygen known metal. So अगर हम इसको देखें तो इस कंपाउंड के अंदर the sodium has +1 valency. इसी तरह से अगर हम K2O की एग्जांपल ले लें तो पोटेशियम हैज +1 वैलेंसी। सो हम देख सकते हैं कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल 1 के, दे ऑल फॉर्म द सिमिलर cation with the oxidative state of +1. So these are the properties of the group 1. Uh, please go through these properties, and if you have any problem you can ask. And in the next video I will discuss the properties of the group 7, and in the last video of this chapter we will discuss the group 8 and the transition elements. Thank you so much.